our problem was to show that a mapping the first countable space to F is a mapping from a first countable space to a topological space Y. Here X is countable. Then F is continuous if and only if every sequence in X such that Xn converges to X implies Fxn converges to Fx. Okay, so this convergence is in the topological space Y. So I leave this as an exercise. I have given a proof in your notes. You can consult these notes. Okay. So let me now come to another notion. So here we discussed first countable space. So there is another countable space which is called second countable. Okay. So the second countable space or second axiom of counting. Second countable space. Okay, or so a topological space actually is second countable. Second countable if X has a countable base. Okay, so can anyone recall me? Can anyone recall what what was the definition of first countable space? Hello? Hello, am I audible to everyone? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अनुराग, हेलो। यस सर। भैया मैं तब से बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी भी किसी को हाँ या ना तो नहीं आता कुछ। हेलो हेलो, आपको Yes, मेरी sir. आवाज सुनाई दे रही है? हाँ ये बोला तो था सर। हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन पूछा था, उसका कोई आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक। आशीष प्रताप सिंह, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आशीष प्रताप सिंह, okay, can anyone tell me what was the definition of first countable space? Topological space. Sir, X is first countable. Sir, X is first countable if it has a local countable base. So here I said X is second countable, it has a countable base. और first countable के लिए क्या था? Local countable base. Okay, means for each X in X there exists
countable local base. Okay, so in case of first countable spaces, we were basically focusing locally. Okay, here in second countable space, we are saying global countable base. Okay, there exists a countable base. We didn't say a local countable base. Okay, so can anyone tell me which implies which one? So if X is first countable, then is it true that it would be second countable? Second countable, first countable. Okay. So tell me which side should be true. Is this correct or is this correct? Which one is correct? Sir, second countable is it can be first countable, but first countable need not be second countable. Okay, you are saying this is true. Okay, not the other Yes. one. So yeah, it's true because you see, if X is second countable, then clearly, so it has a countable base. Then from this countable base, you can surely construct a local countable base. Okay, so so you are right. Every second countable space, second countable space is first countable. Okay, so let us prove this. Theorem. Let us prove it. Suppose X tau be a, let X tau be a second countable space. Okay, so this means X has a countable base, and suppose this funny B be a countable base. Countable base for the topology tau. Okay, now we have to produce a local base. Okay, so let P be an arbitrary point. Be an arbitrary point. Okay, now what you do, you take the collection of, let BP consist of all those members of P which contains P. Okay, then this BP is, then BP is a local base. Okay, and since BP is a subset of a countable set, since BP is a subset of a countable set, it is countable. Okay, this means this means you have constructed a local base at P. Hence, X is first countable. So let us see some examples. Can you give me an example of a second countable space? Example of a second countable space.
There is every metric space second countable. Hello. हेलो. पैसा आ रही है सर. हाँ, तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर चाहिए मुझे. क्या कोई मीट्रिक स्पेस सेकंड, कोई भी मीट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल होगा? ओके, मैं भी चुप हो जाता हूँ आपकी तरह. Okay, do one thing. Please read these notes and ask your doubts. Okay? I'll end the meeting. Okay, then I'll do the same thing now. So if you do not participate, you do not participate in conversation, then there is no meaning of taking a live class. Okay. अगर आप लोगों को नहीं सीखना है तो फिर रहने देते हैं कि किसके लिए कर रहे हैं. आप लोग जब बात नहीं करेंगे, आप लोग अपने क्वेश्चंस, क्योंकि आप ऑनलाइन तो पूछ नहीं रहे, आप ग्रुप में पूछ लीजिए, वो बेहतर होगा शायद. You may now leave.
हेलो प्रतिभा, प्रतिभा, हेलो प्रतिभा, हेलो, आप लोग जब तक कन्वर्सेशन नहीं करेंगे मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्लास को एक साइड से मैं बोलता जाऊं आप सुनते जाएं, तो ये बहुत बोरिंग हो जाता है। आप लोगों को नहीं आता आप मना करिए, लेकिन आप बोलिए। फिर ऐसे ही आप करेंगे तो मैं फिर नॉर्मल तरीके से यही क्लास ले पाऊंगा। आपको नोट्स दे दिया हूँ, आपको कल नोट्स भेज देते और दोबारा से फिर से नोट्स भेज दूंगा, अगर शायद आपको यही अच्छा लगता हो। इज दिस ओके? ये ठीक है ना सबके लिए? नो सर। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो कैसे रिप्लाई करते? हाँ, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ ना बहुत देर से, तो कुछ बोला नहीं है, आपको कैसे सुनेंगे? जब मैं बोल रहा था उस समय कुछ लोगों को सुनाई दे रहा है, लेकिन वो लोग चुप हैं। एक मिनट, आप में से कितने लोग फिजिकली अटेंड कर रहे क्लास? ऐसे तो हो सकता है कि आप लोग ज्वाइन करके चले गए हों, बहुत लोग ऐसा करते हैं। आप में से कोई, अनुज आप क्या वहां पर हैं? यस सर। अनुज, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जब सुनाई भी देता है, आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? आपने फिर से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। अनुराग, कभी कभी Yes, आवाज sir. हेलो। हाँ अनुराग, Yes, आप sir. तो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन बीच बीच में आप भी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते। मुझे कम से कम एक ऐसा चाहिए जो रिस्पॉन्ड करे। रिस्पॉन्ड सर जितना मुझको आता है तो मैं सर रिस्पॉन्ड करता हूँ, जब नहीं आता तो फिर उसमें मैं फिर क्या बोलूँ? तो बोलो कि नहीं आता सर, मुझे नहीं आता, आप मुझे बताइए, या ये मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, ऐसा बोलिए। तो इसमें यही था, मैं सोच नहीं पा रहा था इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, शांत था मैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ मेरे साथ सर जिस हिसाब से क्लास चलती है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि सिर्फ मेरे घर में नेटवर्क आ रहा है, बाकी घरों में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, कि कोई बोलता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ आशीष प्रताप सिंह, आशीष, क्या आप वहां पर हैं या आप केवल ज्वाइन करके चले गए? आशीष का कोई आवाज नहीं है। दीपक गौतम, यस सर। आप मेरी क्लास, जब आप मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब आप बिल्कुल जवाब नहीं देते, ऐसा क्यों? आप सर इतना तो वो बोल सकते हैं ना कि
आप इतना तो बोल सकते हैं कि मुझे ये नहीं मालूम है, ये तो बोला जा सकता है ना। हाँ सर। हाँ, वो भी आप नहीं बोलते। कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार, यस सर। कुलदीप आपको मेरी आवाज आती है बराबर? कभी कभी सर ब्रेक होती है। लेकिन ऑलमोस्ट तो आवाज आप सुनाई देता है ना आपको, कभी कभी यस ब्रेक होता है। सर। और आप कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते। पंसिल, यस सर। पंसिल, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक एज ए कटसी आप लोग जवाब दे सकते हैं ना कि मुझे नहीं मालूम, ऐसा तो बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, लेकिन वो भी नहीं बोलते आप लोग। प्रीति सिंह, प्रीति सिंह, वो गायब है। सरोज, सरोज चंद्रा, यस सर। सरोज आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? सर नहीं आ रहा था इस वजह से। नहीं आ रहा तो बोलिए नहीं आता। ओके ठीक सर, है, बोलिए कि मैं नहीं सोच पा रही हूँ, आप मुझे बताइए। नहीं आना कोई गुनाह नहीं है ना, नहीं आना तो अच्छी बात है, नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट तो कैसे आएगा, लेकिन आप, हाँ, ये इसलिए मैंने सोचा कि आपको आ सकता है क्योंकि पिछले क्लास में मैं कुछ कुछ बातें करी। आप डायरेक्ट बोलिए कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं सोच पा रही। अगर 1 मिनट के अंदर आप नहीं सोच पा रहे तो आप साफ साफ बोलिए मुझे नहीं आ रहा। ऐसा तो कर सकती ना, प्लीज मेरे लिए, मेरे खातिर इतना तो कर सकते हैं। या आपको ये शर्म लगती है कि लोग क्या कहेंगे, मैं मुझे नहीं आता, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर, फिर आपको हाँ। पीछे वाला नहीं पढ़ा और ये। मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था कि फर्स्ट आप मुझे एक सेकंड काउंटेबल स्पेस दीजिए, और फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या मीट्रिक स्पेस इज एवरी मीट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल? इसका आंसर आपको आता है किसी को? फिर से आप लोग चुप हो गए। नहीं आता तो बोलिए नहीं आता है। नहीं सर। नहीं आता, बस नहीं आ रहा बढ़िया, सर। कोई बात नहीं। ओके, सो पहला इसके लिए देखते हैं आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। ओके, टाउ यूजुअल टोपोलॉजी। So this means this is a so this means this is Euclidean metric space R. Okay, so is this space second countable? Let us see whether R tau is second countable. Can you give me a countable base here? Can you give me a countable base here? Okay, can you tell me can you give a countable set in R? कोई काउंटेबल सबसेट आर का बता सकते हैं? ये तो बता सकते हैं आप लोग। Set of rational numbers. Rational numbers. So rational numbers are countable. So the best thing with rational numbers are they are dense in R. Okay, Q is countable and dense in R.
dense means its closure is R. Okay. Now you take this collection. B is the collection of all open intervals, okay, with a rational endpoint. So this means this consists of these intervals. These are open intervals where A and B both are rational numbers. Okay. Correct? So since rationals are countable, therefore this collection B is countable. And you know this is the base. Okay? Since Q is countable, B is countable. Correct? Yes, sir. So B बेस क्यों होगा आप बता सकते हैं B क्यों बेस होगा बेस होने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती थी याद करिए कोई भी x अगर आप R से लें then there exists a member B in this funny B such that x in B and yeah, so that this and second thing, this was the first and second thing, for any two B1 B2 two members in B, their intersection, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाती थी आप लोग याद है आपको Yes, sir. So for this x take x minus 1 okay, so x could be anything na? X could be any rational or irrational, so you may take two numbers, so x be any real number, you take number A and B, choose A and B rational number such that A less than X less than B. आप ऐसा तो हमेशा कर सकते हैं कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है उसके लिए दो रेशनल नंबर आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं जो कि x से छोटा हो और b x से बड़ा हो. Then this interval a comma b belongs to funny b and x is in this interval, which is first part. And for any two interval, say a b c d, their intersection will be say e comma f, okay, where e would be max of okay, so this is either empty or so if they do not intersect then it will be empty set, or if they intersect then it would be e would be c, then it would be c comma b. Okay, it's like this, a b c d. Okay, so intersection is this part. So there are two cases, either a comma b intersection c comma d is empty, then it is easily in this funny b, and if they intersect then you know c and b both are rational, therefore it is in b. Okay? This means this funny b is a base, and since we are taking endpoints of intervals as rational numbers, therefore b is countable. So hence R
with the usual topology, or yeah, R tau is second countable. And you have already seen that R tau is first countable, okay? You have also seen that R with lower limit topology, which is shortest free line RL. This was first countable. You have seen this. Okay. Now, here is the question, whether RL is second countable or not. सर अभी जो आपने थ्योरम बताई है उसके अकॉर्डिंग तो ये सेकंड काउंटेबल भी होगा। थ्योरम मैंने क्या बताइए? थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? सेकंड काउंटेबल इज पेज इज फर्स्ट काउंटेबल। हाँ, तो मैंने बोला एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। अगर ये सेकंड काउंटेबल होता तो ये फर्स्ट काउंटेबल होता। मैंने उल्टा नहीं बताया ना, मैंने ये नहीं कहा कि एवरी फर्स्ट काउंटेबल इज सेकंड काउंटेबल, नहीं कहा ना। तो थ्योरम के हिसाब से तो नहीं कह पाएंगे सर, लेकिन सेकंड काउंटेबल होगा। क्यों होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? सर जो सर ऊपर वाला रीजन लिया, अगर उसके अकॉर्डिंग चलें तो उसमें भी डेंस आर ले रखे हैं तो डेंस होगा। अगर सेट ऑफ रेशनल लें तो उसको भी तो हम ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं, लोअर लिमिट में भी। ओके, मान लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लोअर लिमिट में मैं कैसे लूं? यस सर, ए कॉमा बी फॉर्म का होगा। यस सर, वो इस फॉर्म का होगा ना, ए कॉमा बी फॉर्म का। यस सर। और यहाँ पर ए और बी दोनों क्या हो? ए इज लेस देन बी एंड बी आर रेशनल। ऐसा लो कर। यस सर। आप Yes, ऐसा sir. लो, आप बोल रहे हैं कि इस तरह से लो, ठीक है? यस सर। तो ये पहले तो बताइए बेस क्यों बनाएगा? ये बेस क्यों बनाएगा? सर क्योंकि सेम सर, अगर जैसे आप जो बेस ये सर इसलिए बनाएगा कि तीन कंडीशन। बताइए। इनका इंटरसेक्शन सर क्या कहते हैं, एम्प्टी होगा, इसलिए बेस बनाएगा। किनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा? ए कॉमा बी का। अगर कोई हम दो इंटरवल लेते हैं B1 B2। अच्छा, आपने बोला कि B1 B2 दो इंटरवल ले लिया। नो सर, B1 एक सेट ले A कॉमा B और B2 एक सेट ले C कॉमा D। इसमें A B C D आर रेशनल। आप क्या कह रहे हैं? A1 B1 ऐसा लो? ये सर एक ये ले तो A2 B2 ले लिया। हाँ, फिर जैसे अगर हम A1 B1 को वो B1 मान लें और A2 B2 को B2 मान लें तो B1 इंटरसेक्शन B2 एम्प्टी होगा। क्या होगा? B1 इंटरसेक्शन B2 एम्प्टी होगा। एक मिनट, आपने कहा कि A1 है और ये A2 है, ये B2, तो ये आएगा A2 B1 इस फॉर्म का, या एम्प्टी Yes, होगा sir. या फिर ऐसा आएगा यस सर। ना? यस। फिर फिर आगे मुझे सोच नहीं पा रहा हूँ।
ओके ठीक है, मान लेते हैं इसके पास, चलिए ठीक है, देखते हैं कि अगर ये सेकंड काउंटेबल होगा तो इसके पास तो एक बेस होगा ना, काउंटेबल बेस होगा। यस सर। मान लेते हैं कि इसके पास एक बेस है, लेट बी बी ए बेस फॉर, लेट बी बेस फॉर लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर, ओके, टावर, लोअर लिमिट टोपोलॉजी को टावर, ओके। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ बेस, सो आपने बेस की एक और डेफिनेशन दी थी, आपने बोला था कि कोई भी ओपन सेट लें, कोई भी ओपन सेट, ओके, तो हमें और कोई भी पॉइंट एक्स लें, ओके, एक्स इन बी, तो देयर एग्जिस्ट बेस एलिमेंट बी विच सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी, ऐसा होना चाहिए, ये आपने बोला था, है ना, ये तो डेफिनेशन का पार्ट है। So by definition, for any open set, for any open set B, okay, and sorry, for any open set U, and for any X in U, here exists B, okay, such that X in, correct? Is this correct or not? यस सर। Okay. Now you see, for any open set, so so X belongs to X is arbitrary, X belongs to R is arbitrary. Then you consider this open set X infinity. This is an open set and X belongs to this. So X infinity is an open set containing X. Okay. So what we can see, we can choose an element B, we call that X in B. Okay. With minimum of X. Okay. Since this Bx, okay, so see here is Bx are distinct because their minimum point, this point is distinct, okay, so they are distinct, and so this means for every x in R, you are getting a different Bx. So this means this funny B contains those many uh, basic open sets up to the cardinality of R. Okay, so this means the cardinality of this funny B, cardinality of this is greater than equal to the cardinality of R. क्यों? क्योंकि हर एक x के लिए आपको bx मिल रहा है और सारे के सारे bx डिस्टिंक्ट है. Okay? So this means b is uncountable. B is uncountable. You know, cardinality of R is infinity, but it's L is not. इसको L is not नहीं कहते हैं, इसको कुछ और नाम कहते हैं. L is not होता है n की कार्डिनलिटी. इसको क्या नाम कहते हैं? कंटिन्यूम आई P of
So it is denoted by C, and what do we name it? Forget the name. So this is definitely this is equal to the elif naught. You have seen this. Must have seen this notation. Elif naught. Okay. तो आपको आपके पास क्या मिला? आपने कोई एक बेस लिया, कोई भी आर्बिट्री बेस लिया था, तो आपने पता किया कि ये आर्बिट्री बेस जो है वो अनकाउंटेबल हो रहा है. दिस मीन व्हाट डू यू कंक्लूड हियर फ्रॉम हियर? नॉट सेकंड काउंटेबल. RL is not second. Okay. However, this was first countable. RL was first countable. याद है आपको? यस सर. But RL is first countable. कैसे फर्स्ट काउंटेबल के लिए कैसे हमने दिखाया था? कौन सा लोकल बेस था? X was x, x plus 1 by n. Okay. N is integer. So this was the first countable local base for RL. Okay, let us see what can we say about R with the discrete topology. RD, here B is discrete. You have seen that any discrete space is first countable. Okay? डिस्क्रीट स्पेस क्या था? फर्स्ट काउंटेबल था. अभी यहाँ पर देखते क्या ये डिस्क्रीट स्पेस सेकंड काउंटेबल है या नहीं है? okay? क्या आप बता सकते हैं कि डिस्क्रीट स्पेस कैसा स्पेस होगा? सेकंड काउंटेबल या फर्स्ट काउंटेबल, सॉरी सेकंड काउंटेबल होगा या नहीं होगा? Okay, so any base, what can you say about any base of discrete space? Any base of सर सिंगलटन और सेट इटसेल्फ. हाँ, सिंगलटन तो वहां हमेशा होगा ही होगा ना. एनी बेस ऑफ डिस्क्रीट स्पेस कंटेन ऑल सिंगलटन सेट, सिंगलटन सबसेट्स. ओके, तो इसका मतलब वहां पर ऑल x in R तो है. ओके, so this collection is there. So say any base B. And what can you say about cardinality of this set? What can you say about cardinality of this set? This set. Cardinality of, say, call this A. Cardinality of A is सर R के इक्वल होगी. R की cardinality, R के इक्वल नहीं, cardinality of R. Okay? Same as cardinality of R. Okay, why? Because see here we are taking all real numbers. So this means what सर do you ये get फिर from होगा here? नहीं सर. So this means since cardinality of R is 2 to elif naught, which is not countable. Okay? This is greater than elif naught. So this means R with discrete topology is not second countable. But it was first countable because this
This is the local base. Okay, countable local base. So, okay, so this means so here you get an example which was first countable but not second countable. In fact, you have now two examples which are first countable but not second countable. So here we took R. Instead of R, we could have taken any uncountable set. If X is uncountable set, okay, then XD is not second countable. Okay. So what about Q with the discrete topology? What about Q with discrete topology? Rational set of rational numbers with discrete topology. हाँ, सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने वो पूछा कि x की जगह मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ले रहा हूँ और d की जगह डिस्क्रीट टोपोलॉजी, टाउ जो है हमारे डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इज दिस स्पेस सेकंड काउंटेबल? QD where discrete topology on Q is the set of rational numbers. This second countable. है सर ये सेकंड काउंटेबल होगा। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि रेशनल सर काउंटेबल मतलब उनका एक लोकल बेस होगा। क्या कौन सा लोकल बेस होगा वो बता दीजिए। वो बेस कौन सा आप ले रहे हैं? आपने कहा कि एक लोकल बेस होना चाहिए ना। यस सर। तो वो कौन सा आपको एक देना भी तो पड़ेगा। आपने होगा तो कह दिया, लेकिन कौन सा होगा ये भी देना। क्या आप कोई लोकल बेस बता सकते हैं? डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए लोकल बेस कौन सा होता है? सॉरी डिस्क्रीट सॉरी लोकल बेस क्यों करूंगा? डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए बेस कौन सा होता है? सर नहीं आ पा रहा है। अभी तो आपने इसका आंसर दिया ना। अभी तो आपने बोला आप कोई भी सबसेट को, कोई भी सबसेट है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में होते क्या, पहले मुझे बताइए। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन सेट क्या सारे सारे सबसेट्स होंगे। यस सर, सारे सबसेट। कलेक्शन ऑफ ऑल। आपको कोई भी सबसेट बनाना है, उसको कैसे बनाते हैं? यूनियन ऑफ सिंगलटन्स लिख सकते हैं ना। यस सर। सिंगलटन्स आर ओपन। यस सर, सिंगलटन ऑफ पावर सेट आर ओपन अक्रॉस बोथ। हाँ, सिंगलटन्स आर ओपन। तो आप कोई भी सेट ए है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ऑल ए इन ए। एनी सबसेट, कोई भी सबसेट है तो उसको यूनियन ऑफ सिंगलटन लिख सकते हैं। बिकॉज सिंगल यूनियन ऑफ सिंगलटन इज ओपन, arbitrary union of open set is open in topological space, therefore A is open. So कोई भी सबसेट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। So can you now tell me
what base we should take. रिपीट करिए, क्या सुन नहीं पाया। इस स्पेस के लिए आपको एक बेस बताना था और ये हिंट है। सर सिंगलटन सेट का कलेक्शन होगा इस हाँ, सिंगलटन सेट्स का कलेक्शन। कौन बोल रहे हैं? पंचशील। पंचशील, बढ़िया। So this collection is a base. Okay, therefore, since Q is countable, therefore this collection is countable. Okay, is this correct? So hence Yes. QD is second countable. Okay, यहाँ पर रेशनल नंबर सिस्टम में आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेंगे तो वो सेकंड काउंटेबल। ओके, so the theorem, property of being a second countable space. Is hereditary. So what does this mean? This means if X is second countable and Y is a subspace of X, then Y is also second countable. But this is very easy to see. X second countable है, okay? आपको पता करना है कि Y भी second countable है, Y is a subspace, Y subspace. So since X is second countable, this means you will get a base which is countable, okay, for this topology on X. Okay? So you will get this. So have a countable base for topology on X. Okay? अभी आप बताइए, आपके पास एक टोपोलॉजी X में गिवन है, आप और आपके पास एक टोपोलॉजी, एक सबस्पेस टोपोलॉजी Y में गिवन है, Y जो कि सबसेट होगा X का। आपके पास एक बेस भी, आपको एक बेस कंस्ट्रक्ट करना है Y में, कैसे करेंगे? Let me call BY. कैसे फाइंड करेंगे? हमने ये फर्स्ट एग्जाम में देखा था। फिर से आप लोग चुप हो जाते हैं। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, बताइए कैसे करेंगे? ये बेस है, बेस ओपन सेट्स होते हैं ना X में। यस सर। आपको सब स्पेस में ओपन सेट्स कैसे पता करते हो आप? सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट्स कैसे फाइंड करते हैं? सर अगर उनका इंटरसेक्शन लेकर। किसके साथ में? सर एक बेस के एलिमेंट के साथ में। किसका इंटरसेक्शन? किसका इंटरसेक्शन किसके साथ?
मतलब जैसे सर y क्या कहते हैं सेक्शन x का है तो y का इंटरसेक्शन लेंगे u के साथ में जो कि q पाव का मेंबर होगा, एलिमेंट होगा। हाँ, यहाँ पर वो u की जगह क्या है, bn है, तो by को क्या लेना पड़ेगा आपको? bn लेना पड़ेगा सर। हाँ, तो पूरा बताइए। सर bn इंटरसेक्शन u इज द एलिमेंट ऑफ टाउ। अभी तो आप लोग y के साथ लेने को बोला था, आपने अभी बोला ना y इंटरसेक्शन यस y सर। के साथ लेंगे। अब आप bn इंटरसेक्शन u कह रहे हैं, किसके साथ होगा? पहले आप उसे कंफर्म कर लीजिए। सर bn के साथ नहीं होगा। थोड़ा सोच लीजिए, सारे लोग सोचिए और फिर मुझे आंसर दीजिए कि हमने एक स्पेस बनाना है सब स्पेस y में से, जबकि हमको एक बेस x में गिवन है। हेलो हाँ, कौन बोल रहे हैं? अनुराग। हाँ, बोलिए। सर सही है सर, bn टाउ का मेंबर एलिमेंट होगा सर। किसका? सर टाउ टोपोलॉजी का। हाँ, वो तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप समझे मैंने क्या पूछा? bn तो ये बेस है, इसका मतलब वो टाउ का ही तो एलिमेंट होगा ना, क्योंकि बेस तो टाउ का ही सब कलेक्शन होता है। मेरा क्वेश्चन यस है, सर। हमें हमें एक बेस गिवन है x के लिए, ये b नाम दिया उसका, ये b नाम दिया। हमारे पास एक सब स्पेस है x का, मैं इस बेस की मदद से सब स्पेस के लिए एक बेस बनाना। तो यस सर। थोड़ा सा सोचिए और बताइए। और केवल आप ही क्यों सोच रहे हैं, और लोग भी तो सोचना चाहिए ना। सर बाकियों के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। एक बात बताइए, आशीष प्रताप सिंह, आप कभी भी बोलते नहीं, केवल मैसेज लिखते हैं, ऐसा क्यों भाई? आशीष प्रताप सिंह, ये बहुत अजीब सी बात है। मीन्स वो तो मैं बीच बीच में आके देख पाता हूँ, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट पूछिए ना, सुन रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे तो क्वेश्चन मैं मिस कर सकता हूँ ना कभी भी। आप मैसेज, मैं जब दूसरे स्लाइड में होता हूँ, दूसरे स्क्रीन में होता हूँ, तो मैं नहीं देख पाता आपके मैसेज। और ये आशीष प्रताप सिंह बात क्यों नहीं करते? इनको आवाज नहीं सुनाई देती क्या? मीन्स इनके पास अ, ये बोल नहीं सकते नेटवर्क क्या? इश्यू है सर, नेटवर्क इश्यू सर, वॉइस शायद नहीं पहुंच रही उन तक के। चलिए भैया, अगर ऐसा है तो उनको मालूम कैसे चल रहा है कि मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ?
ओके, कोई पंचशील आप बताइए, आंसर दीजिए इसका। ओके, छोड़िए, हमें बी गिवन है, सॉरी, ये एक बेस है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, ओपन सेट है ना। अब मुझे एक बात बताइए, वाई में ओपन सेट कैसा होगा अनुराग? सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट किस फॉर्म के होते हैं? साथ में लिख सकते, जो एक्स का बेस है उसके एलिमेंट के इंटरसेक्शन के साथ लिख सकते हो। इंटरसेक्शन किसके साथ भी है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इंटरसेक्शन के साथ लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन किसके साथ लेना पड़ेगा? मतलब एक्स के जो ओपन एलिमेंट, एक्स के एलिमेंट है, जो एक्स के बेस के जो ओपन, एलिमेंट है सर, एक्स का बेस जो है बी, उसके ओपन एलिमेंट के साथ किसका ओपन सेट। इंटरसेक्शन? ये तो सारे ओपन होते हैं ना सर वाई के वो, हेलो, हाँ, आप बहुत कंफ्यूज, आपको केवल वो इंटरसेक्शन याद आ रहा है, लेकिन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो किसका किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। सिंपल सा है, वाई के सर साथ, क्वेश्चन वाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे ना, तभी तो वो वाई के अंदर जाएगा। अगर bn तो कोई भी Yes, sir. सबसेट है x का, आपको ओपन सेट या बेस बनाना है y के लिए, तो आप क्या देखोगे, जो सबसे सही वो है क्या, y के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, तभी तो ये सब y के अंदर आएंगे, के बाद ही तो ये y का सबसेट बनेगा, है ना। जी सबसे इंट्यूटिव तो यही है, तो आपको बोलना चाहिए था कि ये जो बी वाई है उसको हमें लेना पड़ेगा y इंटरसेक्शन बी एन, वेर एन इज, so this is given a countable base in x, we can produce a countable base for y, और वो क्या है, वो है bn intersection y. Is this correct? yes sir. So this by is a base, is a countable for the subspace tau. Okay. So this second countable is axiom, is a topological property. Okay. So being a second countable space, space is a topological property. So what does this mean by topological property? This means if we have two spaces x and y, and suppose we have a homeomorphism f, we have a homeomorphism, then if fx, sorry, then if x is second countable, x is second countable, then y is also second countable. Okay, so this is the meaning of topological property. अगर f आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है तो x और y दोनों ही सेकंड काउंटेबल होंगे, अगर कोई एक भी सेकंड काउंटेबल हुआ तो. ओके, so we will see this, so we will prove it tomorrow, so I'll leave at this place. So try to prove this. Okay? तो आप एज्यूम करिए कि x टाउ सेकंड काउंटेबल है, और प्रूव करिए कि y जो है वो भी सेकंड काउंटेबल है.
So I leave at this place. So drop your attention.